half decades, India in last 7.5 decades has enjoyed, right inverted comma, the title of world's largest democracy, inverted comma closed, and it is an important outlier in democracies. It is an important outlier in democracies. क्यों है आउटलायर? क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए थी एक तरीके से. क्यों? अंडरलाइन आउटलायर. देखो, पुअर एंड मल्टी एथनिक कंट्री बिकमिंग अ डेमोक्रेसी. पुअर एंड मल्टी एथनिक कंट्री बिकमिंग अ डेमोक्रेसी. देखो, बट इंडिया सस्टेन्ड and even today remains one of the most vibrant democracy. For example, in 2024 general elections, more than 8,000 candidates from 744 political parties contested the general elections. ठीक, सेकंड लिखो, बट इन इंडिया फंक्शनिंग ऑफ, ये आप लोग सब पेपर 1 में भी यूज कर लेना, ठीक है? ये कल अचानक से मेरे को बुक मिल गई, अभी आई एकदम पढ़ डाल. नहीं ऑथर्स तो कुछ और हैं, देयर आर सम 15-20 एसेज, तो इंडिया स्पेसिफिक एक ऐसे था इसमें, ठीक है? तो लिखो, एक और क्या लिखा हमने? लिखो, बट इन इंडिया द रेफरी इंस्टीट्यूशंस, द फंक्शनिंग ऑफ रेफरी इंस्टीट्यूशंस is not a norm, it's an exception. Is not a norm, but is an exception. ठीक है, लिखो, फॉर एग्जाम्पल, during the first two party systems, ये पढ़ा होगा ना आपने, 4 party systems इंडिया में, ठीक है? During the first 2 party systems, referee institutions were weak. ठीक, लिखो, it is only with the decline of Congress, comma, referee institutions started functioning. Next लिखो, next point लिखो, but with the emergence of 4th party system, comma, the referee institutions are again experiencing 3 different processes. Right, first, deference, DEFERENC, deference मतलब नहीं, डिफरेंस मतलब रिस्पेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है? आप देखो, हर किसी का ट्वीट होता है, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ आदरणीय दिस दैट, ठीक है? डैश करके लिखो, डिफरेंस मतलब लिखो, क्रिएटिंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव, वो भी है, वो मीनिंग भी है, एंड क्या बताया था? प्रोलॉन्गिंग, ठीक है? लिखो, फॉर एग्जांपल, in collegium system, executive is using, right inverted comma, pick and choose method. ठीक, सेकंड लिखो, सेकंड प्रोसेस क्या हो रहा है? इंटरफियरेंस, ठीक है? लिखो, फॉर एग्जांपल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, which at one point told parliament that electoral bonds were not a good idea, comma, eventually backtracked on it, ठीक है? थर्ड लिखो, बैकट्रैक्ड, बाद में बोलने लगे क्या आइडिया है सर जी, ठीक है? थर्ड लिखो, निग्लेक्ट, ठीक है? तो लिखो, many institutions like Lokpal and CIC have been neglected. ठीक, तो 3 चीजें मिलान वैष्णव बता रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नॉट ओनली referee institutions, comma, but even civil society is witnessing
decline. And today, even civil society seems to be controlled. ठीक है, अब उधर आ जाओ, हमने दो इंस्टीट्यूशंस बताई थी अकाउंटेबिलिटी की, इंस्टीट्यूशनल और, तो वर्टिकल में आ जाओ. देखो फॉर एग्जांपल the rise of populist radical right parties such as Party for Freedom PVV in Netherlands, comma, Freedom Party of Austria FPO, and the slogans like right inverted comma, Thai style democracy in Thailand, Thai style democracy in Thailand. ठीक है, थाई स्टाइल मतलब वही कौन नेशनल है कौन एंटी नेशनल है, तो जो क्राउन और ब्यूरोक्रेसी से ड्रिवन होंगी उस डेमोक्रेसी को बेटर मानेंगे, जो भी ज्यादा फ्रीडम वगैरह की बात करेगा उसको एंटी नेशनल बना देंगे. So this is what has happened to democracy. So these are latest and contemporary challenges to democracy. These are the reasons. पुराना रीजन कुछ और था. पुराना रीजन क्या था? आउटसाइड. नया रीजन क्या है? इनसाइड. ठीक है, इनसाइड क्यों है? डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग एंड डेमोक्रेटिक फॉलोइंग. क्यों? बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व द विनर्स डायलेमा. क्या है विनर्स डायलेमा? यू आर कैप्चरिंग बोथ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल. किसने बताया है लूजर्स एंड विनर्स डायलेमा? एडम प्रेसवॉस्की. ठीक है, फिर लूजर्स डायलेमा कैसे सॉल्व किया हमने? रस्टोव क्या है इसका नाम? तो मेरे को भी याद नहीं भाई, क्या नाम था? डंकवॉट रस्टोव. अभी है टाइम, लिखो क्लास लिखो, आज खत्म ही कर लेते हैं. लिखो, हाउ इंडिया हैज व्यूड डेमोक्रेसी as a tool of diplomacy. ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 1. देखो जनरली इंडिया has rarely employed democracy promotion as an explicit tool of its foreign policy. ठीक है, देखो instead India has always believed that democracy can be promoted through economic development and institution building. ठीक है, देखो according to Dr. Manmohan Singh, right in bracket 2005. देखो democratic rule in India demonstrates that democracy is the most powerful tool to successfully overcome the challenge of development. ठीक, right, next point. Because similar sentiments were echoed by PM Modi in 2023 Summit for Democracy. When he said, right inverted comma, democracy can deliver. ठीक है, underline democracy can deliver. Drop an error and write. Because that is why India has always promoted non-interventionist methods such as development cooperation, capacity building, and technical assistance in promoting democracy. For example, India has provided technical assistance on the use of EVMs to more than dozen countries. Second, India's Indelible Election Inc. जो अभी दो लगा के घूम रहे थे ना, Indelible, अरे जो मिटती नहीं, India's Indelible Election Inc. is supplied to some 30 countries
is supplied to some 30 countries. Next, because the Election Commission of India has established IIDEM, IIDEM, write in bracket, India International Institute of Democracy and Election Management, to train other countries, Next, ECI also conducts International Election Visitors Program, to engage with election management bodies of other countries. For example, till today ECI has trained 70,000 election officials since 2011 from 109 countries. Mexico. India hosted World Movement for Democracy Conference in 1999. Second, next, India is a founding member of UN Democracy Caucus 2004. UN Democracy Caucus, CAUCUS 2004. Next, India, along with USA, established UN Democracy Development Fund. Next, when it comes to USA and the European partners, democracy has become a joint issue in most of the engagements. Okay, next, yet in India, pragmatism is over promotion of democracy. Especially in the neighborhood. For example, the case of Bangladesh. Also, in India, there is not a single NGO which actively promotes the democracy internationally. ठीक है, तो ये इंडिया का व्यू है. तो वी आर डन विद डेमोक्रेसी एज एन इंटरनेशनल कंसर्न. कल हम ह्यूमन राइट्स होगा तो खत्म कर लेंगे जल्दी से, मतलब लिख के. ठीक है, हाँ तो जाते ही हैं, उनको ट्रेन वगैरह सब किया है, कर रहे होंगे इन्वॉल्व, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है. तभी तो ईसी का डाउनफॉल इज समथिंग विच शुड नॉट हैपन, क्योंकि ये इंडिया का, ये कह सकते हो गिफ्ट है वर्ल्ड को. आज तक ईसीआई पे ऐसी आज जनरली नहीं आई है जो अब चल रहा है. ठीक है, चलिए, धन्यवाद.